शिवराज सिंह जी घोषणा करते हैं हर 10 महीने 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। हर 10 महीने ये करते, आप पढ़ते हैं ना। मैं तो शिवराज सिंह तो कहता हूं, आप तो समझदार अतिथि शिक्षक वालों को रोजगार दे दो, बाकी बात छोड़ो। नौजवानों, आपको एक बात समझनी है, आपकी दुनिया कुछ और है, हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी। हमारे बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काटा बिना बिजली के, बिना पानी के, बिना सड़क के। पर नौजवानों, आपको कैसा आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा? इतना भ्रष्टाचार। रोजगार चाहिए, आ जाइए भोपाल, पैसे दीजिए, रोजगार मिलेगा। आवेदन करता है कोई, एग्जाम में बैठता है दूसरा, भर्ती होती है तीसरे की, भर्ती होती है तीसरे की, वेतन लेता है चौथा। ये स्थिति है। कहां घोटाला नहीं है, ये तो घोटाला प्रदेश बना दिया शिवराज सिंह जी ने। ये आपको बात समझनी है। आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जहां देखो वहां आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। और मैं आपको यही वचन देता हूं अंत में कि बड़वानी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता। 2.5 घंटे से अधिक कालखंड तक निरंतर योग किया और सरकार का भी ये स्लोगन है उत्तराखंड का, विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा संकल्प से सिद्धि की यात्रा को पूरा करना है। योग युक्त, रोग मुक्त और नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है और योग के साथ उद्योग और उद्यमशीलता को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड को दुनिया की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करना है। इस संकल्प के साथ आज का यह योग दिवस यहाँ संपन्न हुआ है, जिसमें हमारे हिंदू भाइयों के साथ साथ आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, एक तरफ पगड़ी भी है सिर पर सन्यासी के, तो दूसरी तरफ टोपी भी है। माने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, देश विदेश की जाति की, प्रांतों की सारी सीमाओं को पाट करके आज योगमय विश्व हो रहा है, योगमय युग हो रहा है। और इससे पूरे विश्व में भारत का गौरव, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। सफेद कलर की ड्रेस में संदेश देने की कोशिश है। श्वेत वस्त्र शांति का प्रतीक तो स्वभाव से ही है और इसीलिए सबके ड्रेस का प्रोटोकॉल में श्वेत वस्त्र, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी अनायास ही कोई प्रोटोकॉल के तहत नहीं, श्वेत वस्त्र पहन के ही आए हैं। तो चारों तरफ शांति हो, सद्भावना हो, ये तो संकल्प है ही। एक लास्ट बात कह करके, आर्थिक और राजनीतिक साम्राज्य बनते बिगड़ते रहते हैं। यदि कोई सच्चा साम्राज्य है तो वो सांस्कृतिक साम्राज्य है, और वो सांस्कृतिक सनातन साम्राज्य हमारा। Actually, what we feel that is just like as if we have no work in our tiny state, extreme northeast bordering Indo-Myanmar. Because as a citizen of this country, we are waiting here to meet Honorable Prime Minister, as Ajay Kumarji already mentioned in his introductory speech. Since 10 June till today, we hope that at least 5-10 minutes, Honorable Prime Minister will spare for us. We are not coming here for begging something from the Honorable Prime Minister. Actually, we are not beggar. Though we are coming from a small, tiny, bordering, international bordering state, they may be thought that these people are coming from far places for begging something. That is extremely sorry. As a citizen of this country, what is happening there in Manipur, they should not be treated. This is a small state, tiny state. It should be considered as a national issue of this vast country. If they think that
if they take Manipur is also part of India. You see, since 3rd May, it has already been started, this unfortunate incident. This is due to what I should say, incapable of double-engine government in Manipur. For handling of this situation, they openly accept this Mr. Biren Singh, Chief Minister of Manipur, he accept openly in the public this unfortunate incident was happened due to lack of information, due to complete failure of law and order. He openly accept it. And who will take moral responsibility? Let the BJP, let the center, Shri Narendra Modi ji's government, let them decide what kind of appropriate action they will take it. Although it's the attitude of the union government, irrespective of any party, I have the opportunity for serving this term of problem, small state of Manipur, 15 years, huge problem during our time also. Ban blockade, indefinite ban blockade is there. But anyhow, we are managing with the help of, from time to time, right from the very beginning of late Shri Atal Bihari Vajpayee ji. We are managing, we are handling. But this time is more seriously affected due to incapable of handling of this crisis by Shri Biren Singh. He also publicly he accepted. State government and center, it should be equally responsible, what I should say. Because if Government of India has a good determination and commitment, it can be controlled very easily within 2-3 days or latest within 1 week. Because Government of India claim that we are in this superpower. India is entering in a superpower. So Manipur is a geographically a small, tiny state. How many manpower is there? State government alone, state forces, whether Indian Reserve Force, Manipur Police, Manipur Rifle, Village Development Force, put together more than 35,000. In addition to that, Government of India claimed that, including Rapid Action Force, different kind of forces, they are already sending there more than 60,000 plus state-owned forces. How much it has been? It may be each and every house of Manipur, it can be deployed. Last one and a half months, it has already gone till today. It could not be contained, it cannot be controlled. There is absolutely no normalcy yet. Yes, though. This is why we are also quite surprising everybody. Everybody will be surprised. Whether they are doing it is intentionally or is there any hidden or secret agenda of the BJP government both at the center and the state. Why they did not appropriate action, prompt action timely? If they have gut, if they have determination, if they have commitment, it can be controlled within 2-3 days. What we would like to suggest, whether it may be Kuki militants under SHU or any illegal or legal arms, simultaneously there should have to be, say, within these 3 days, all arms should be disarmed. Government of India can take this action appropriately without any further delay. If once this is on arm holders, if they disarm, then the peace will be followed and dialogue will be followed.
So why they are not doing? Is there any agenda, hidden agenda or secret agenda of the both center and state government? This is the question. And why they are so neglected? The Northeast, particularly Manipur at this juncture. Manipur is burning. Not only burning, I would like to remind one point. When there is temple in Australia or in Canada, entire government of India is crying. Kya ho gaya Australia, temple vandalized and the Canada. How many churches, including few temples, has already been destroyed in Manipur? When Honorable Prime Minister visiting to a foreign country, if somebody asks to him, what is happening in Manipur, more than 70 in the heart of the city, and all to put together, it may be cross more than 600 churches and temples already vandalized, already dismantled. When Honorable Prime Minister visit the foreign country, you Indians are crying when one temple was vandalized maybe in Canada, maybe in Australia. Kya ho gaya? What is happening in India, that is in Manipur? It has already been demolished. And what will be our answer? What will be our Honorable Prime Minister answer? What we are talking is not as an opposition, but this is the question where the Government of India and Honorable Prime Minister is answerable this question. So at this stage, it has already been reached at this stage. Why Government of India is silent? Of course, the Honorable Home Minister Amit Shahji visited Manipur after a gap of complete 26 days, as I have already mentioned in our last press briefing also. He stayed there 3 days. Yes, BJP, they claim that where any other state, at any time of crisis, Honorable Home Minister stayed 3 days. So they are quite, how much they are serious, they claim, BJP, they are claiming. What we would like to say, to stay there 3 days, 1 week, 10 days, that is not our concern. Even if he or Honorable Prime Minister visit is not a matter. But we want peace. Without any visiting also, we want peace. That should not be count 3 days he is staying there. After he stay, during his stay also, still continue firing, killing each other. So what is the use of staying 3 days? This is what we want to put this question. When he is staying there in 3 days, during that period also, still continuing firing took place, both sides. So is there any intention, Government of India, let them kill each other? Only when they have finished their ammunition or when they finish, they have tired, then they will definitely listen what our advice. Is there any, this type of attitude is there? This is also questionable. If it is happened somewhere in the mainland of this India, India will definitely burn. If it is happened UP, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, somewhere here, including Bihar, Bengal. So this attitude, we can't tolerate. That's why sometimes we feel that Manipur is not a part of, whether Manipur is a part of India or not. This type of ill treatment and this type of attitude, the youths of the Manipur, what they think that those illegal, whether anti-national, those people, they are misguiding our youths. What is the use of merging of Manipur with the mainland, the Union of India? You know, you people will aware that in the year 1947, India attained independence. Till 1949, Manipur was a sovereign, princely, independent country.
After 2 years of India's independence, only in 1949, Manipur was merged with the Union of India under one merger agreement, which was entered in Shillong. That's why the so-called youth, misguided youth, they started crying. This wrong decision, merger with the Union of India. What we thought that we are all citizens of this vast country. But the treatment done by the BJP or any government, so we can't tolerate. That's why we have submitted a memorandum to the Prime Minister PMO, signing all those our 10 like-minded political leaders. After signing their signature, we have submitted. So what we are thinking, still shall we wait till Honorable Prime Minister return from the foreign country, or what is the use of wait till he return? This is also questionable. And also, what we thought that, as I have already mentioned, they may be thought that, oh, let us give something for them, let them return, something like that. As if we are a beggar, we are coming here to beg something, please give something. If they thought like that, that is extremely unfortunate. And they should not, if they think like that, that will be a wrong step for the people of Manipur. And also, as already mentioned, our Ajay Kumarji already mentioned, still there are ministers, speakers, MLAs of BJP, they are also waiting here. This type of attitude in a democratic country is most unfortunate. फिर अपने लेफ्ट साइड में बाएं तरफ, फिर दाहिनी तरफ, फिर अपने लेफ्ट साइड में बाएं तरफ, फिर दाहिनी तरफ, फिर अपने लेफ्ट साइड में बाएं तरफ, फिर दाहिनी तरफ, फिर अपने लेफ्ट साइड में बाएं तरफ, फिर अभी भी हमारी तबीयत खराब है। तबीयत खराब नहीं है, वो उस दिन मैं मुजफ्फरपुर जा रहा था ना, गाड़ी तेज चली ना, किसी गड्ढे में गाड़ी लुढ़क गया। उसी में ये जो नस है ना, ये नस मांसपेशी में घुस गया। तो वो भरत बाबू से इलाज करवा रहे हैं, डॉक्टर भरत सिंह हैं, इसलिए मैं अधिक देर तक नहीं बैठ पाया। लेकिन आज योग दिवस है, इसलिए आना भी था और करना भी था। लेकिन अभी मैं ठीक हूँ, 1-2 दिन अभी मैं आज दिल्ली जाऊँगा तो वहाँ National Yoga Day, and it is only fitting, therefore, that the inspiration behind the idea is with us today in this scenic, multicultural setting of the United Nations. Ladies and gentlemen, it is truly beautiful to see so many around the world gather in solidarity for yoga. It is not living with the burden of weight or the lightness of oblivion. It is a choice made with balance, an idiosyncratic beauty, timeless throughout the progress of humanity. Yoga has endured. It is truth beyond articulation, wisdom beyond time. I hope all of you will cherish 21st June this year and hold it close to your hearts, today and forever. Thank you. Thank you, Ambassador Cambodge, for your remarks. It's my turn now to invite the Honorable President of the UN General Assembly, Mr. Chaba Karoshi, for the stage. Honorable Prime Minister, Madam Deputy Secretary General,
Mr. Mayor, Madam Ambassador, dear friends, Namaste. Yoga is a way of uniting mind and body, and also the environment and us. The most memorable university lectures I attended as a student many years ago were on cultural traditions of ancient Eastern civilizations. They helped me understand that we are part of nature, despite regarding ourselves as aristocratically detached from other creatures. I also learned that the energies in the universe and inside us abide by the same law, a desire to achieve balance. Yoga changes our physical performance. But more importantly, it can spark in us different mental and intellectual performance. With the control that it teaches over ourselves, we learn how to make change and impact. Since that university lecture, I've been an admirer of yoga. I'm very proud of my daughter, who has already reached a high level of practice and is continuing her journey. Thanks to her, I understand better yoga's ethical guide. The guide, which includes the principle of non-stealing, non-greed, non-hoarding, and non-violence. In other words, yoga's ethical guide to living is a guide to sustainability, not overusing resources that belong to all of us, not prioritizing short-term gains over planetary boundaries, and working for transformation. Our world needs balance, self-control, and creativity, just as it needs recognition of moral responsibilities and cherishing peace and justice. There are many ways to approach these aims. Yoga is one of the means, for which I have a special respect. I'm happy to be here with all of you today, but let me apologize in advance. I am not a yoga practitioner, and the positions which you will show might look very different from what I end up doing. Still, I'm here with an open heart and open mind. Thank you very much. Thank you, President Karoshi, for highlighting the transformative power of yoga and in such a very personal way. At this time, I would now ask that Mayor Eric Adams, the mayor of the city of New York, please take the stage. To Prime Minister Modi, to President of the General Assembly, to Deputy Secretary General, to Your Excellencies, to the Ambassador, to all of you, do not miss the significance of this moment. New York City is the largest and most important city in America. As I stand before you as the mayor of that city, I share with you in a clear and a universal tone that we are no longer focused solely on the physical body, but the anatomy of our spirit. For far too long, we have separated what our needs are emotionally, spiritually, and physically. We are going to go to the root causes of that which troubles many of us, from how we interact, to the food we eat, to allowing our children to have breathing exercises in the morning as they start their school day, to challenge the mental health issues that's impacting us.
But there's a larger challenge for all of us. What we do on the mat in practicing yoga must become what we do on the streets and in our countries. We cannot become universally connected through the yellow mats we lay on, but disconnected as we move through our communities. Use the spirit and emotions of yoga to challenge and fight against war, to fight against gender oppression, to fight against violence, to fight against the lack of clean water, to fight against the food insecurity, to fight against the destruction of our planet. Our connectivity is not only how we're connected to our families and our parents. We have two mothers. One gave birth to us and one sustains us. Yoga keeps us connected to both mothers and connected to each other. This International Yoga Day is an international call for us to stand up for humankind across the globe and all living beings. I'm proud to be here, and I'm proud to symbolically represent this city as stating the International Yoga Day is an international call that we will be a leader here in New York City as you are a leader in your own environments. Thank you for allowing me to rejoice with you today. Thank you, Mayor Adams, for spotlighting how yoga is integral to the anatomy of one's spirit. We appreciate that perspective and input. I'd like now to go to the video message of the UN Secretary General Antonio Guterres, who is not available to be with us in person, but is here in spirit. Please let us go to the videotape. Happy International Day of Yoga. I want to recognize Prime Minister Modi for all he has done to promote understanding of yoga and its many benefits. Yoga unites. It unites body and mind, humanity and nature, and millions of people across the globe for whom it is a source of strength, harmony, and peace. In a dangerous and divided world, the benefits of this ancient practice are particularly precious. Yoga offers a haven of calm. It can reduce anxiety and promote mental well-being. It helps us to develop discipline and patience. It connects us to our planet, which so badly needs our protection. And it reveals our common humanity, helping us to understand that despite our differences, we are one. On this International Day of Yoga, let us embrace the spirit of unity and resolve to build a better, more harmonious world for people, planet, and ourselves. Friends, it is one of the deepest honors and privileges of my life to extend a heartfelt welcome, a heartfelt welcome and an invitation to no one else but the Honorable Prime Minister of India, Modi ji. I ask that on this auspicious occasion that he join us and that he address us with his remarks. Let us give him a very, very warm welcome. Thank you. Your Excellency, Chaba Koroshi, President of UN General Assembly, Her Excellency Amina Mohammed, Deputy Secretary General of the Union, His Excellency Eric Adams, Mayor of New York, and my dear friends from all over the world. Namaskar. Friends, on this fine morning, we are gathered here at the United Nations, at the meeting point of entire humanity.
in this wonderful city of New York. I know many of you have come here from far away. Most of you have woken up before sunrise and made the effort to come here. I am delighted to see you all, and I thank you all for coming. Friends, I am told that almost every nationality is represented here today. And what an amazing cause to bring us all together, yoga. Yoga means to unite. So your coming together is an expression of another form of yoga. I remember about 9 years ago, right here at the UN, I had the honor to propose celebrating the International Day of Yoga on 21st June. It was wonderful to see the entire world come together to support the idea back then. I've just paid respect to the brave UN peacekeepers. In 2015, I had called for a new memorial to be built at the UN in their memory. And last week, the whole world joined hands with India to make this reality soon. As the largest troop contributing nation, we are grateful to all nations for their expression of support to this noble cause. Last year, the entire world came together to support India's proposal to celebrate 2023 as the International Year of Millets. Millets are a superfood. They promote holistic health and are good for environment too. And today, it is wonderful to see the entire world come together again for yoga. Friends, yoga comes from India, and it is a very old tradition. But like all ancient Indian traditions, it is also living and dynamic. Yoga is free from copyright, free from patents, and free from royalty payments. Yoga is adaptable to your age, gender, and fitness level. Yoga is portable. You can do it at home or at work or in transit. Yoga is flexible. You can practice it alone or in a group, learn from a teacher or be self-taught. Yoga is unifying. It is for everyone, for all ethnicities, for all faiths, and for all cultures. Yoga is truly universal. Friends, when we do yoga, we feel physically fit, mentally calm,
and emotionally content. But it is not just about doing exercise on a mat. Yoga is a way of life, a holistic approach to health and well-being, a way to mindfulness in thoughts and actions, a way to live in harmony with self, with others, and with nature. I am delighted that many of you are working on scientifically validating different aspects of yoga. Indeed, this is the way. Friends, I know you are all keen to get started. Well, so am I. I want to thank the United Nations for hosting us here today. I am grateful to the mayor and the city of New York for all their help and support in making this event success. And most of all, want to thank you all once again for being here today. Let us use the power of yoga not only to be healthy, happy, but also to be kind to ourselves and to each other. Let us use the power of yoga to build bridges of friendship, a peaceful world, and a cleaner, greener, and sustainable future. Let us join hands together to realize the goal of one earth, one family, one future. I conclude with a wish. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya. May everyone be happy. May everyone be healthy. Thank you. Thank you, Prime Minister Modi ji, for conveying such an inspirational message to us, for elaborating more about our theme, Vasudeva Kutumbakam, and stressing how yoga is really a way of life. At this time, I request that our esteemed dignitaries please leave the stage and join us below for the yoga lesson, because we would like to start that soon. You may... Friends, I'm now going to call upon yoga instructor Miss Annalise Richmond so that she can join on the stage. Quickly. We're going to prepare the stage so that we can get it ready for our yoga lesson. I've mentioned before that we'll have 6 energetic youngsters leading us along with Miss Annalise Richmond in this lesson. And we have more in the first row here on the north lawn joining us so that people behind can also follow that way too. I'm requesting that everyone stay on your yoga mat in your spot and to follow our yoga instructor and our yoga practitioners to the best of our ability. It's such a beautiful morning to have this opportunity to engage in yoga. The sun is not so strong, and we have a nice breeze coming through, which makes for a very pleasant morning for us to all share in this collective group. I'm delighted now to hand over the floor to our accomplished yoga instructor, Miss Annalise Richmond, who will now start our yoga session.
Thank you, Denise. A very warm welcome to our Honorable Prime Minister Modi ji and dignitaries. It is an honor to have you with us in our midst. We are delighted. Namaste. Let us all enter into the world of yoga together. Can you hear me in the back? Yes. Good. Let's bring our hands together in front of the heart in prayer pose. Keep the shoulders relaxed. And we'll do an invocation together. We'll be chanting Om 3 times together. Let's close the eyes. Let's take a deep breath in and breathe out. Breathe in and breathe out. And let us chant Om. Deep breath in. Breathe in. Sangachadvam samvadadvam samvo manamsi janatam deva bhagam yatha purve sanyanana upasate sanyanana upasate Sanyanana upasate. Let's relax our hands in our lap. And when you feel ready, you can gently open your eyes. We'll start our yoga sadhana, or yoga practice, with some loosening exercises to increase the circulation in the body. So let's stand up. We'll start in samastiti, alert posture. So the feet 2 to 3 inches apart from each other in parallel. Stand with the spine tall. And let's bring our hands onto our waist. We'll do neck exercises first. Be careful in case of any neck injuries or cervical spondylitis here. Let's inhale, stretch the spine. Exhale, bring the chin to the chest as much as you can, all the way to the chest. Inhale, raise the head back up. Exhale, let the chin and head fall back, face to the sky. Inhale, head to the center. Exhale, chin to the chest. Relax. Inhale, bring the head back to the center. Exhale, let the head go back, stretching the front of the neck. And one more time, inhale to the center. Exhale, chin to the chest. Stretch the back of the neck. Inhale the head to the center. You can smile. And exhale, let the head go back gently. Open the throat and chest. Inhale back to the center. Relax. Good. Keeping the hands on the waist, we'll twist the neck from right to left.
Be careful not to jerk the neck. Let's inhale, stand tall. Exhale, turn the chin over the right shoulder. Look all the way over to the right. Feel the stretch in the left side of the neck. Inhale, back to the center. Smile. Exhale, the chin over the left shoulder. Feel the stretch in the right side of the neck. Good. Inhale, back to the center. And exhale, chin over the right shoulder. Look as far as you can with the eyes. Inhale, back to the center. Breathe in. Exhale, chin over the left shoulder. Look to the left. Good. Inhale, come back to the center. And exhale, relax. Good. Now we'll do trunk twisting to warm up the body and spine. Be careful of any spinal injuries in this warm-up. So let's bring the feet 1 foot apart. Feet in parallel in Samasthiti, alert posture. Back is tall. Inhale, take the arms out in front of you, hands parallel to each other. Exhale, keep the hips where they are. Turn just the upper body to the right. Left palm towards the right shoulder. Look to the right. Good. Inhale, come back to the center. Palms facing each other. Exhale, twist just the upper body to the left. Palm facing the left shoulder. Good. Inhale, come back. Looking forward, palms facing each other. Exhale, twist just the upper body to the right. Look to the right. Left palm to the right shoulder. Good. Inhale, come back to the center. And exhale, twist just the upper body to the left. Right palm towards the left shoulder. Good. Inhale, come back to the center. You can smile. Exhale, relax. Good. Now let's start our yoga asanas, or yoga postures. We'll start with Tadasana, the palm tree posture. If you have any arthritis in the lower extremities, don't raise up onto your ankles in this posture. So for Tadasana, we'll start in Samasthiti, feet 2 to 3 inches apart from each other. And inhale, raise the arms up to shoulder height. Exhale, clasp the fingers and push the palms away from you. Good. Inhale, raise the arms up. Exhale here, lengthen the spine. Inhale, come up onto the toes and breathe here. Breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, grow taller. And breathe out, slowly lower down the feet. Unclasp the hands slowly with awareness on the body. Lower the arms down slowly. Good. And relax. And now again, let's bring the feet 2 to 3 inches apart. Samasthiti, alert posture. We'll take a back bend. If you have any vertigo or back injuries, be careful with this pose. So Ardha Chakrasana, the half-wheel posture. Let's take the hands to the waist. Inhale, grow tall. Exhale, slide the fingers back to support the back, elbows in parallel behind the back. Inhale, let the head go back, opening the front of the neck. As you exhale, bend from the lumbar spine, go back carefully and easily as far back as you can. And let's breathe here. Breathe in and breathe out. Breathe in and out. Awareness on the whole body. Breathe in. And breathe out. Good. Inhale, lift the chest, come back up. Slowly. Good. And exhale, relax. Good. We'll take a forward bend. Pada Hastasana, the hands to the feet posture. So keeping the feet in parallel, 2 to 3 inches apart from each other. Inhale, take the arms up from the front, all the way up. And exhale, bending only from the hip joint. Keep the legs straight. Start to reach forward. Stretch your fingertips forward till your body is like a table parallel to the ground. And now slowly lower the fingertips down. Either bring the hands to the shins or fingertips to the ground, or the palms on the ground if you can. Drop your head towards your knees. Let's take a few deep breaths. Breathe in. And breathe out. Keep the legs straight. Breathe in.
As you breathe out, head towards the knees. Breathe in, breathe out, go a little further. Breathe in, and breathe out. Good. Inhale, slide the fingertips forward, stretch the arms forward, let the back come up with the arms. Breathe in slowly, come all the way up. Smile. Good. And relax. Excellent. And we'll go to the floor. You can just stretch the legs out in front of you. Put your hands behind your back in a relaxed posture. Let the head go back a little. Vishramasana. This is our relaxation pose. And now let's bring the feet together. Toes pointing up to the sky. Hands beside the hips, spine tall. Tadasana. Inhale, lengthen your spine. Good. Exhale, press the hips into the ground. And now we'll do Bhadrasana, the firm posture. So be careful in this posture in case of sciatica or arthritis. Let's inhale, bring the feet together, soles of the feet together. Exhale, wrap your hands around your feet. Good. Inhale, sit tall. And exhale, pull the heels as close as you can to the perineum. Relax. If you like, you can even close your eyes here. Breathe in. Exhale, let the knees drop towards the ground. Inhale. And exhale. Inhale. Exhale. Breathe into the whole body. Breathe in. And breathe out. Good. Gently stretch the legs back out. Put the hands behind your back. Recline back just a little. Again, Vishramasana. Let the head fall back a little. Good. And again, we'll come into Dandasana. The toes pointing up. Hands beside the hips. Press down into the ground a little. Lengthen the spine. Breathe in. Exhale. We'll come into Vajrasana, the diamond pose. Be careful of this pose in case of ankle or knee injuries. Let's inhale, bring the right heel towards the right buttocks. Exhale. Inhale, left heel towards the left buttocks. Place the buttocks in the space between the toes and the heels. Hands on the knees. And you can gaze softly downwards or close the eyes. Let's take a few deep breaths with the awareness on the whole body. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. One more breath. Breathe in and breathe out. And when you feel ready, you can open the eyes. Good. We'll take a back bend. We'll take the half camel posture, Ardha Ustrasana. Let's inhale, come up onto our knees. Ooh, that's a relief, isn't it? Okay, and let's bring our hands onto our lower back. Be careful in this pose in case of vertigo or any spinal injuries. So let's inhale here. Bring the elbows towards each other behind the back. Let the head fall back. And exhale, bend backwards from the upper back, arching backwards. Chest to the sky. Breathe in. Breathe out. Let the head fall back easily. Breathe in. Breathe out. Breathe in. And breathe out. One more time. Breathe in. And out. Inhale. Come back up slowly with awareness on the whole body. Good. Exhale. Gently relax. Good. Now we'll bend forward. So we'll take Shashakasana, the hare posture. So be careful in case of osteoarthritis of the knees. You can come out of this posture. Yeah? Inhale, open the knees. Exhale, let's put the hands between the legs. Inhale, lengthen your spine. And exhale, slide forward gently and slowly, all the way, keeping the
arms in parallel with each other. Bring the chin to the ground if you can, and relax the whole body. If the chin doesn't want to touch the ground, bring the forehead to the ground and relax. Breathe into your hips. Breathe in. Breathe out. Deep breath in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. One more gentle breath in and out. Good. Inhale, come back up slowly with awareness on the whole body. Breathe in. Exhale, close the knees. Good. And we'll take the stretched up frog posture, Uttana Madhukasan. So inhale, let's take the knees to the side. Again, if this is bothering your knees, you can sit in a different position for this. Yeah. Inhale, take the arms up from the front, stretch the spine, smile, and exhale, bend from the elbows only. The palms onto alternate shoulder blades. Right palm on the left shoulder blade, left palm on the right shoulder blade. See if you can keep the chin parallel to the earth. And let's take a few deep breaths. Breathe in. Breathe out. Breathe into the chest. Notice the chest is opening. Breathe in. Breathe out. You can smile. Breathe in. And breathe out. Good. Inhale. Raise the arms up. Good. Exhale. Relax. And you can close the knees. And the moment you've been waiting for, let's slide down onto our mat on our stomach. Come all the way down. Make a pillow with the hands. Turn your head to the right side. Take your feet 2 feet apart or so. Let them splay out to the side. Turn the head. Put it onto the hands. Makarasan, crocodile pose. You're like a crocodile resting in the sun. Let the breath relax. Good. Now bring the legs together. Take the arms out in front of you. You can have them resting on the ground. We'll do Bhujangasan, cobra pose. Be careful of this pose in case of hernia or any abdominal injuries. Inhale, bring the hands underneath the shoulders, elbows close to the body. Exhale here. And inhale, lift the head, chin, chest, upper chest into the navel. And breathe here. Deep breath in. Breathe out. Relax the shoulders. Push them down and back. Breathe in. And breathe out. Breathe in. And breathe out. One more breath in. Come a little higher. And exhale. Slowly lower down. Again, make the pillow with the hands. Turn the head this time to the left side. Legs apart. Makarasan on the other side. Crocodile pose. Resting in the sun. Let the breath relax. Now gently, let's turn onto our backs. Gently roll to the back. Relax. And we'll do Pavan Muktasan, the wind-freeing posture. So inhale, bring the knees up. Exhale, bring the knees to the chest, towards the chest. Inhale, clasp the fingers together, place them on the shins, wrap the arms around the legs. Exhale, bring the forehead towards the knees until the chin or nose touches the knees. Breathe in and breathe out. Deep breaths. Awareness on the whole body. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. One more breath. Breathe in. And exhale. Release the head down. Relax the legs.
Slide them down onto the ground. Let the legs be 1 to 2 feet apart. Let the toes fall out to the sides and the arms by your sides, palms facing up to the sky, relaxing the arms on the ground. Shavasana or corpse pose. Relax the whole body. Become aware of the natural flow of the breath. And let's take our attention to our toes and feet, ankles, legs, knees, thighs, and hips, our abdomen, stomach, chest, shoulders, right arm and hand, eyes are closed, left arm and hand, the neck and the throat, the head and face, eyes, the top of the head, the whole body, the whole body. Slowly and gradually, take a deep breath in and breathe out. Let's turn and rest on our right side for a moment, resting on the right side. Slowly and gently, come all the way back up to a comfortable, easy seated position. You can sit cross-legged if you like, or in lotus or half lotus. Sit with the spine tall. And we'll practice some breathing techniques or pranayama. So with the spine tall, let's bring our hands into Gyan Mudra. A mudra is a hand position that directs the flow of prana or energy in the body. So index finger and thumb are lightly touching, and the backs of the hands resting on the lap. Good. We'll do Kapalabhati breathing. So in Kapalabhati breathing, we'll be forcefully contracting the abdomen, and the air forcefully shoots out of the nose like this. In Kapalabhati breathing, after we contract the abdomen and the air comes out of the nose, the inhalation happens on its own. Okay? We'll take 20 repetitions of Kapalabhati breathing. So let's close the eyes. Take a deep breath in through the nose. And we'll take 20 rounds of Kapalabhati. Let's begin. Relax. With the eyes closed, relax the hands.
Notice the energy or prana in the body, all over the body. When you feel ready, you can open your eyes. Good. And we'll do Nadi Shodhana Pranayama, or alternate nostril breathing. So let's bring the left hand into Jnana Mudra, index finger and thumb lightly touching, other three fingers extended. Rest the left hand on the knee, left knee. And the right hand, let's take it into Pranayama Mudra. So you'll bring the index and middle finger towards the palm and place the right thumb on the right nostril. Close the nostril. And exhale out of the left nostril. Close the eyes. Good. Inhale through the left nostril. Close it with the ring finger. And exhale out of the right nostril. Good. Inhale through the right. Close the nostril with the thumb. Exhale out of the left. Inhale through the left. Close with the ring finger. Exhale out of the right. Inhale through the right. Close with the thumb. Exhale out of the left. Inhale through the left nostril. Close with the ring finger. Exhale out of the right. One more. Inhale through the right. Close with the thumb. Exhale out of the left. With the eyes closed, relax the right hand in the lap. If you like, you can bring it into Gyan Mudra. Relax the hands. And notice the balance in the body and the balance between the right and left hemisphere of the brain. And when you feel ready, you can gently and slowly open your eyes. We'll do one more pranayama, Brahmari pranayama. So let's bring, again, the hands into Gyan Mudra, index finger and thumb lightly touching. In Brahmari pranayama, we'll be making the sound of a bee, a humming sound, like this. We'll do this with a special mudra called Shanmukhi mudra. We'll be closing off all of the senses. Yeah? So let's bring the hands towards the face. Shanmukhi mudra, we close the eyes, gently touch the index fingers onto the eyelids, and then the middle fingers onto both sides of the nose without closing the nostrils. The ring finger above the lips, right below the nose, and place the pinky finger right beneath the lips. And we'll be, in a moment, closing the ear flaps with the thumbs. And we're going to be taking deep breaths in and breathing out with the humming sound 3 times. So let's go ahead and close the ear flaps with the thumbs. Take a deep breath in. And breathe out with a humming sound. Deep breath in. Again with the humming sound. One more time. Deep breath in. Breathe out. With the eyes closed, relax the hands in the lap. We'll be practicing dhyan or meditation. You can keep your eyes closed and bring the hands into dhyan mudra, which is into the center of the lap. Bring the right hand into the center of the lap, palms facing up, and the
the left hand into the center of the lap and bring the right hand on top of it. Both palms facing up. The palms are stacked. And with the eyes closed, let's take a deep breath in and breathe out. Relax the shoulders. Take a long, deep breath in. As you breathe out, feel the weight of the body dropped onto the ground where you're sitting. Become aware of the whole body and become aware of all the sounds around you. Any sounds that you hear, notice them and let the sounds be there as they are. You are in harmony with the environment as it is. Take a deep breath in and breathe out. Become aware of any thoughts that are floating through the mind. Do not resist any thoughts. Let them come. Now you are in harmony with the thoughts, with the mind. And become aware of any feelings, pleasant or unpleasant. Accept the feelings as they are. You are peace. You are joy. Breathe in and let go. Again, become aware of your feelings. Become aware of your thoughts. Become aware of your whole body. And let's immerse ourselves in the sounds. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् शान्ति शान्ति शान्ति. Take a deep breath in and breathe out. A long, deep breath in and breathe out.
Become aware of your whole body. And where you're seated on the earth, breathe in and breathe out. And slowly and gently, when you feel ready, you can gradually open your eyes. Good. Namaste. Om Shanti Shanti Om, everyone. What an uplifting and revitalizing yoga session we've had. And the sun even started to come out even more, shining its rays upon us so gloriously. We're here in this beautiful North Lawn of the United Nations headquarters in New York City, celebrating World Yoga Day 2023. A sincere thank you, Annalise Richmond, and to all our young yoga practitioners who've helped to demonstrate during this yoga session. We have an unforgettable event with them and for the youngsters in the first row leading us as well this morning. One more round of thanks to them as they exit the stage and take their leave. Namaste. Namaste. Have a beautiful day. Our deepest gratitude to the Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi ji, for gracing us with his presence and in creating this wonderful memory at the iconic United Nations headquarters that we cherish from years to come. Friends, I am going to ask if you can please stay in your seats. Please remain seated while the Honorable Prime Minister of India meets and greets participants. The Honorable Prime Minister will meet and greet participants. May I ask for your cooperation and your understanding. Friends, may I ask that you remain seated at your yoga mats, please, as the dignitaries and His Excellency Prime Minister Modi ji meets and greets and mingles with some people. Excellencies and friends, I have some incredible news to share. A Guinness World Record is created today. Today we have gone for a Guinness World Record now in the books. It's a world record for the most nationalities in a yoga lesson. The most nationalities in a yoga lesson right here at New York UN headquarters. Big congratulations to all of us for being part of this historic event. To share more details and conducting this formal proceeding, I'd like to... अवसर पर सभी भारतीयों का ये गौरव है कि यूएन हेडक्वार्टर्स में हमारे प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी योगाभ्यास के माध्यम से हिंदुस्तान की विरासत और विकास के पथ पर अग्रसर भारत इनका संदेश पूरे विश्व को पुनः दे पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर सभी भारतवासियों को
और विश्व के सभी योगा प्रेमियों को हम सब हिंदुस्तानी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हिंदुस्तान निरोगी हो, हिंदुस्तान हमारा नव भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आर्थिक व्यवस्था में अपने आप को उत्तीर्ण करे, यही कल्पना हम सबकी है। योग के माध्यम से आप सब जीवन में संयम का संचार कर सके, यही हम सबकी अभिलाषा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ही इज द बॉस। आज इलॉन मस्क ने कह दिया कि आई एम अ मोदी फैन। I think that it is a proud privilege for all Indians to witness the resurgence of our not only economic prospects but also the impact India now has culturally across the world, that the world looks at India for not only investment opportunities but towards India from the perspective of a new global order that is emerging is an issue to be proud of as an Indian. योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष योग दिवस के अवसर पर मैं किसी न किसी आयोजन में आप सभी के बीच उपस्थित रहता हूं। आप सबके साथ मिलकर के योग करने का आनंद भी यादगार रहता है। लेकिन इस बार विभिन्न दायित्वों की वजह से मैं अभी अमेरिका में हूं। इसलिए आप सभी से वीडियो संदेश के माध्यम से जुड़ रहा हूं। साथियों, आपको ये भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं। और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा, इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। सेना के जवानों ने भी हमारे जल स्रोतों के साथ एक योग भारतमाला और योग सागरमाला बनाई है। इसी तरह आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक भारत के 2 रिसर्च बेस यानी पृथ्वी के 2 ध्रुव भी योग से जुड़ रहे हैं।
योग के इस अनूठे सेलिब्रेशन में देश दुनिया के करोड़ों लोगों का इतने सहज स्वरूप में शामिल होना योग के प्रसार और प्रसिद्धि को, उसके महात्म्य को उजागर करता है। भाइयों और बहनों, हमारे ऋषियों ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, युज्यते एतद इति योगः, अर्थात जो जोड़ता है वो योग है। इसलिए योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। इसलिए इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 समिट की थीम भी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखी गई है। और आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर एक साथ योग कर रहे हैं। साथियों, हमारे योग इसके संबंध में ग्रंथों में कहा गया है, व्यायामात लभते स्वास्थ्यम दीर्घ आयुष्यम बलम सुखम, अर्थात योग से, व्यायाम से हमें स्वास्थ्य, आयुष और बल मिलता है। हम में से कितने ही लोग जो बीते वर्षों में योग से नियमित जुड़े हैं, उन्होंने योग की ऊर्जा को महसूस किया है। व्यक्तिगत स्तर पर हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण होता है, ये हम सब जानते हैं। हमने ये भी देखा है कि जब हम स्वास्थ्य संकटों से सुरक्षित होते हैं तो हमारा परिवार कितनी ही परेशानियों से बच जाता है। योग एक ऐसे स्वस्थ और सामर्थ्यशाली समाज का निर्माण करता है जिसकी सामूहिक ऊर्जा कई गुना ज्यादा हो जाती है। बीते वर्षों में स्वच्छ भारत जैसे संकल्पों से लेकर स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों तक, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण से लेकर सांस्कृतिक भारत के पुनर्निर्माण तक, देश और देश के युवाओं में जो असाधारण गति दिखी है, उसमें इस ऊर्जा का बहुत बड़ा योगदान है। आज देश का मन बदला है और इसलिए जनजीवन भी बदला है। साथियों, भारत की संस्कृति हो या समाज संरचना हो, भारत का आध्यात्म हो या हमारे आदर्श हो, भारत का दर्शन हो या दृष्टि हो, हमने हमेशा जोड़ने, अपनाने और अंगीकार करने वाली परंपराओं को पोषित किया है। हमने नए विचारों का स्वागत किया है, उन्हें संरक्षण दिया है। हमने
विविधताओं को समृद्ध किया है, उन्हें सेलिब्रेट किया है। ऐसी हर संभावना को योग प्रबल से प्रबलतम करता है। योग हमारी अंतःदृष्टि को विस्तार देता है। योग हमें उस चेतना से जोड़ता है जो हमें जीव मात्र की एकता का एहसास कराती है, जो हमें प्राणी मात्र से प्रेम का आधार देती है। इसलिए हमें योग के जरिए हमारे अंतर विरोधों को खत्म करना है। हमें योग के जरिए हमारे गतिरोधों और प्रतिरोधों को भी खत्म करके रहना है। हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को विश्व के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। भाइयों बहनों, योग के लिए कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। आजादी के अमृत काल में ये मंत्र हम सभी के लिए बहुत अहम है। जब हम अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित हो जाते हैं तो हम योग की सिद्धि तक पहुंच जाते हैं। योग के जरिए हम निष्काम कर्म को जानते हैं। हम कर्म से कर्म योग तक की यात्रा तय करते हैं। मुझे विश्वास है योग से हम अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएंगे और इन संकल्पों को भी आत्मसात करेंगे। हमारा शारीरिक सामर्थ्य, हमारा मानसिक विस्तार, हमारी चेतना शक्ति, हमारी सामूहिक ऊर्जा विकसित भारत का आधार बनेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को योग दिवस की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ कर्नल रोहित चौधरी, जो हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसके बाद, हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, पिछले अनेक सालों से वो लगातार पूर्व सैनिकों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। OROP के मुद्दे पर उन्होंने बढ़ चढ़ कर पूर्व सैनिकों की लड़ाई लड़ी और पिछले 8 साल से वो हरियाणा के एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के अध्यक्ष भी थे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कर्नल रोहित चौधरी जी से कि वो अपनी प्राथमिकता बताएं और एक्स सर्विसमैन की जो इश्यूज़ हैं, उनकी जो समस्याएं हैं देश भर के, जिस तरह से उनके साथ धोखा हुआ है मोदी सरकार के दौरान, उसके बारे में आपको बताएंगे। प्रेस के ऑनरेबल मेंबरान, मेरे साथी विनीत जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, यूपीए की प्रेसिडेंट चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी का, फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी का, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी जी का और तमाम जनरल सेक्रेटरीज AICC के और तमाम लीडरान हरियाणा के, जिन्होंने मुझे
सहयोग दिया। और आप सब लोग, क्योंकि मैं एक नया इंसान नहीं हूँ यहाँ पे, मैं आप लोगों से 8 साल से परिचित हूँ। जंतर मंतर से 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, आप लोगों का बहुत सहयोग मिला। तो मैं सारे शीर्ष नेतृत्व का पहले तो बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं कांग्रेस पार्टी के AICC में हेडक्वार्टर्स के अंदर देश भर में जाकर एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी को, डिफेंस कम्युनिटी को, जो कि तकरीबन 1 करोड़ परिवार हैं पूरे देश भर में, उन सबको जोड़ूं, उनके मुद्दों को कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से उठाएं, और ताकि हमारे आगे आने वाले वक्त में जो हमारी डिमांड्स हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, उनको ठीक से तवज्जो मिले और प्रेजेंट सरकार के साथ लड़ाई लड़ते हुए हम उनको पूरा कराएं। और अगर नहीं पूरे होते हैं तो 2024 में हमारी सरकार बनने जा रही है, तो उसके अंदर हम इन मुद्दों को एज ए गारंटी हमारे एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से एज ए गारंटी हम उसको पास करवाने का और इम्प्लीमेंट करवाने का काम करेंगे, जिसमें ये NDA सरकार पूरी तरह से विफल रही है। साथियों, हमारा एक्स सर्विसमैन जो कम्युनिटी है वो नेशनलिस्ट कम्युनिटी है, राष्ट्रवादी कम्युनिटी है, और हम लोग देश की एकता और अखंडता के लिए जब नौकरी कर रहे होते हैं, सर्विस में होते हैं, तो बॉर्डर्स पे लड़ाई लड़ते हुए अपनी शहादत भी देते हैं, अपनी कुर्बानियां भी देते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम वापस सोसाइटी में रिटायरमेंट के बाद आते हैं, तो हम एक देश का प्रति एक सोशल पॉलिटिकल दायित्व रखते हैं कि हम अपने देश को सही दिशा निर्देश अपने अपने छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में, शहरों में सब जगह देने का काम करें। तो हमारा सबसे बड़ा एक कोर इशू है 1 रैंक 1 पेंशन का, जो कि यूपीए की सरकार ने 26 फरवरी 2014 के ऑर्डर के तहत और दोनों में पार्लियामेंट के सदन, लोकसभा और राज्यसभा में पास कराने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक डेफिनेशन तैयार की थी। और यूपी ने अपने कार्यकाल में तकरीबन 23,000 करोड़ रुपया इस पुरानी पेंशन और आज के जो रिटायर हो रहे थे उन लोगों की पेंशन को कम करने, गैप को कम करने का काम किया। 23,000 करोड़ रुपया उसके लिए 2009 में, 2011 में और 2013 में दिया, और फिर उसके बाद 2014 में उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ऑर्डर निकाल दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत सारे एक्स सर्विसमैन उस समय मोदी जी के जुमलों के झांसे में आ गए और उन्होंने सोचा कि ये मोदी जी 1 रैंक 1 पेंशन जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और हम लोग उनसे मिलने गए तो उन्होंने रेवाड़ी में रैली करने से पहले 2013 अगस्त में जो रैली की थी उससे पहले हमारे डेलीगेशंस जो गए उनको कहा कि हम आपकी ये डिमांड 100 दिन में पूरा करेंगे, पहले 100 दिन के अंदर। लेकिन रेवाड़ी रैली के अंदर उन्होंने 5 बार उस स्टेज के ऊपर घूमकर 5 बार उन्होंने कहा, मैं अपने देश के सैनिकों को नमन करता हूं, नमन करता हूं, नमन करता हूं, और मैं इसको पूरा करूंगा और उनके इज्जत, मान और सम्मान को देने का काम करूंगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने नहीं किया। हम कई बार उनके पास गए, जेटली साहब के पास भी गए, राजनाथ साहब के पास भी गए, लेकिन मोदी साहब ने आज तक हमें मिलने का समय नहीं दिया। और अल्टीमेटली हमें 1.25 साल के बाद, 100 दिन की बजाय 1.25 साल के बाद हमें 2015 में जंतर मंतर पर आकर बैठना पड़ा, लड़ाई लड़ी और अनशन पे भी बैठे। आमरण अनशन चल रहा था, बिहार के चुनाव आ गए सितंबर 2015 में, तो घबरा गए। उस घबराहट के अंदर इन्होंने एक
मोदी साहब उस दिन फरीदाबाद की मेट्रो का उद्घाटन करने जा रहे थे तो वहाँ से कहा कि मैंने 1 रैंक 1 पेंशन फौजियों को दे दिया है। लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ तकलीफ, जिस तरह से हमने कहा कि भी जिस तरह से यूपीए ने एक डेफिनेशन दी थी उसके तहत काम नहीं किया। हम संघर्षरत रहे, जंतर मंतर पे बैठे रहे और आज भी हमारा तकरीबन 3000 दिन हमारे जंतर मंतर पर पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज तक हमें वो OROP कहीं दिखाई देने को नहीं मिल रही है। जिस प्रधानमंत्री ने और जिस सरकार ने देश के सैनिकों से, जो देश का सैनिक बॉर्डर पे खड़ा होकर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए देश के लिए तैयार रहता है, अगर उससे खिलवाड़ किया या उससे धोखा दिया या उसको जुमले का एक सहारा बनाकर हमारे सामने एक जुमला फेंक दिया, तो ये मेरे ख्याल से हमारे लिए और हमारे देश के लिए बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोग दुनिया से छलावा करके उनकी वोट तो ले लेते हैं लेकिन उनके वादों को पूरा नहीं करते। अब रही बात आज की, 1 रैंक 1 पेंशन के OROP 2 जो 2019 में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इतना प्रेशर उनके ऊपर आया, जब मेवात में हजारों की तादाद में एक्स सर्विसमैन वहाँ पे मिले राहुल गांधी जी से और यात्रा के अंदर शामिल हुए, तो इन्होंने आनन फानन में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, जो कि 9 महीने से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लंबित था, हर 3-3 महीने में ये एक्सटेंड करवा रहे थे। लेकिन उसको 21 दिसंबर को जब हम भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी से मिले, उनको मेमोरेंडम दिया, तो उसके बाद इन्होंने एक अगले दिन ही 22 दिसंबर 2023 को मीटिंग करी और OROP 2 फाइनल कर दिया। और उससे 5 दिन पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट दिया था, जिसमें उसमें कहा, हमारी मिसलेनियस एप्लीकेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया और उसमें कहा कि सरकार के पास ना तो टेबल है ना पैसा है, तो सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी। लेकिन एक चीज जब मोदी जी को पता नहीं है कि आप देश के सामने जब बात रखते हो तो बिल्कुल तथ्यों के साथ होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के अंदर 15 मार्च 2022 को ऑर्डर दे दिया था कि 3 महीने के अंदर अंदर इम्प्लीमेंटेशन करो, OROP 2 का इक्वलाइजेशन करनी थी, वो नहीं किया। और पैसे का बजटरी प्रोविजन उनको करना चाहिए था, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया था, होना था, अभी पैसा उनको प्रोविजन रखना चाहिए था। आप ये कैसे कह सकते हैं दिसंबर में जाकर कि हमारे पास पैसा नहीं है? तो इसका मतलब आपकी या तो फॉल्टी प्लानिंग है या आपकी नीयत में खोट है। तो अब हालात इस तरह के हैं। इन्होंने जो 1 रैंक 1 पेंशन का जो मसौदा तैयार किया है, इसके अंदर बहुत ही बुरे रूप से इसके अंदर खामियां, एनॉमलीज क्रिएट कर दी हैं, जिसकी वजह से हमारे JCOs की पेंशन जो है उसमें 6000 रुपया कम हो गया। जहां 2014 में जो उनको मिल रहा था, 2019 की इंप्लीमेंटेशन हुई तो उसके बाद उसको कम कर दिया, 6000 कम। तो सारे देश में इसके खिलाफ संघर्ष चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक विश्वास की कमी आनी शुरू हो गई है कि भाई ऐसे कैसे हुआ कि फौज जब लड़ाई लड़ती है तो फौज का अफसर, JCO और अदर रैंक्स जवान सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लॉयल्टी, इंटेग्रिटी, निष्ठा, इस भाव से लड़ाई लड़ते हैं। और आज उन्हीं को ही, उस फैब्रिक को, उस ताने बाने को इन्होंने खराब करने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है। और इस की वजह से कुछ चुनिंदा लोगों ने कुछ गलत स्पीचेस भी देनी शुरू की हैं। तो उन स्पीचेस को टैकल करने के लिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल डिसिप्लिन एंड विजिलेंस डिफेंस फोर्सेस के, उसको एक ये लेटर जारी करना पड़ा है। 26 मई 2023 को ये लेटर जारी किया है। इसकी चाहिए तो इसकी कॉपी ले लीजिए। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि इसका असर फौज के अंदर सेवारत सर्विंग सोल्जर्स और ऑफिसर्स और JCOs के संबंधों के बीच में आ सकता है। तो ये म्यूटिनस एक्ट हो सकता है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है।
तो इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता था अगर मोदी सरकार अगर ढंग से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करती, या उनकी नीयत में खोट है कि वो जैसे दुनिया के बीच में सब जो जाति धर्म इस तरह का भेदभाव पूरे देश भर के अंदर कर रहे हैं, तो इस तरह का भेदभाव वो कहीं फौजों में तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका असर जो है बहुत दूरगामी होगा। अगर ये फौज के साथ खिलवाड़ करेंगे तो फौज का जो फैब्रिक है, सिस्टम है, उसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो ये देश की एकता अखंडता के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है और हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो इसलिए मोदी सरकार से रिक्वेस्ट है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये इस तरह के जो विसंगतियां हैं उसको बिना किसी देरी के उसको ठीक करे, इम्प्लीमेंट करे, करेक्ट रूप से इम्प्लीमेंट करे। इसके अलावा और बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं। इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि 2015 में एक रेड्डी कमीशन बनाया गया इस वन रैंक वन पेंशन के लिए, लेकिन हुआ क्या, वो रेड्डी कमीशन को जो है उसका कार्यकाल बढ़ाते चले गए, उसकी रिपोर्ट को इन्होंने साझा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा, उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से छुपाया गया रेड्डी कमीशन की रिकमेंडेशन को। सरकार ने जो ऑर्डर किया था कि 5 साल बाद इक्वलाइजेशन होगी, लेकिन रेड्डी कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि 3 साल के बाद इसकी इक्वलाइजेशन होनी चाहिए। तो इसका मतलब सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से तथ्यों को छुपाया, और जब ये 2022 में जो ऑर्डर आया है तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। तो जो सुप्रीम कोर्ट से भी बातों को छुपा सकते हैं, सैनिकों को जुमले के तहत उनकी जो हक अदायगी है वो नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी सरकार से हमें नाउम्मीद हम हो रहे हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि 2024 के अंदर इनको यहाँ से हटाया जाएगा और एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी पूरी तरह से इनको उठाएगी। इसके अलावा हमने आपके प्रेस नोट के अंदर कुछ और चीज़ें भी मेंशन की हैं। हमारे कई सारे मुद्दे हैं, जैसे विडोज़ की पेंशन है वो 60% हो जाती है, उसको हमने कहा है कि उसको पूरा किया जाए। ऐसे ही रिजर्विस्ट हैं, उनकी पेंशन होती है, या फिर एक मिनिमम सिपाही की पेंशन दी जाती है जो कि 1962, 65 और 71 की लड़ाई लड़े हुए हैं। कुछ ही चुनिंदा लोग हैं लेकिन वो हैं, अभी जिंदा हैं, तो उनको प्रॉपर उनके रैंक के हिसाब से उनको पेंशन दी जाए। तो ये उनको मिनिमम 11,000 रुपये की पेंशन या 12,000 रुपये की अभी जो OROP 2 के अंदर दी जा रही है, तो वो ना किया जाए। इसके अलावा डिसेबिलिटी पेंशन है, उसको भी हम कहते हैं कि भी उसके अंदर भी थोड़ी पैरिटी लेके आए। इसके अलावा मिलिट्री सर्विस पे हमारे जो सेवा में डिफ़िकल्ट एरियाज़ के अंदर जो सब काम करते हैं, कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, तो उसके लिए मिलिट्री सर्विस पे अलग अलग रैंक की अलग अलग नहीं होनी चाहिए, बराबर सबकी एक जैसी होनी चाहिए। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि भाई 80 साल के बाद अब पेंशन को 25% इंक्रीज कर देते हैं, तो जब ये 80 ईयर्स कंप्लीट होने के बजाय 79 ईयर्स जब हो जाते हैं, या रनिंग 79 ईयर्स होता है, तो उस टाइम पे किया जाना चाहिए, 80वां साल जब चल रहा होता है। इसके अलावा हमारी डिमांड है कि जो एक्स सर्विसमैन कमीशन है वो एक बनाया जाए, जिसके अंदर जैसे SC ST कमीशन है, विमेन कमीशन है, चाइल्ड प्रोटेक्शन का कमीशन है, इस तरह से एक एक्स सर्विसमैन कमीशन होना चाहिए, जिसके अंदर हम जो हमारे जो रेगुलर मुद्दे हैं, हमें हर जगह कोर्ट में ना जाके उन मुद्दों को हम वहाँ पे सुलझाया जा सके हमारा। और क्योंकि हमारे जवान कोई 35 साल में, 37 साल में, 40 साल में रिटायरमेंट आते हैं, तो जैसे बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर 60 साल तक सेवा करने का मौका मिलता है, तो इसमें एक सेकंड कैरियर ऑप्शन की एक स्कीम ज़रूर आनी चाहिए, ताकि उनको अपने जो उनका टैलेंट है, उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से उनको दूसरी किसी सर्विस के अंदर मौका दिया जाए, ताकि वो 60 साल तक सेवा दे सकें। और इसके साथ ही एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे फौजी
भाई जो रिटायर होके आ जाते हैं वो बहुत सारी जगहों पे सिक्योरिटी की एजेंसीज के अंदर काम कर रहे हैं। वो देश के सैनिक जिसने अपनी छाती पे बुलेट्स ली हैं, या देश का सैनिक जिसने बॉर्डर के ऊपर तपती हुई धूप के अंदर, जहां पे गर्मी इतनी ज्यादा होती है डेजर्ट एरिया में कि टैंक के ऊपर हाथ लगा दो तो स्किन उस पर चिपक जाती है, या हाई ऑल्टीट्यूड एरिया जहां पर ठंड की वजह से -30, 35, 40 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहां आप लोहे के ऊपर हाथ लगा दो तो आपकी स्किन चिपक जाती है। तो जिन लोगों ने ऐसे काम किए हैं, देश के लिए पूरे जज्बे से काम किए हैं, तो उनको किसी के इंडस्ट्रियलिस्ट के पास या किसी के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते देखना मुझे शर्म की बात लगती है। तो उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया था यूपीए सरकार के कार्यकाल में कि 10% रिजर्वेशन सभी जगह पे, सभी कैटेगरीज के अंदर दिया जाएगा। तो उसके तकरीबन 7,82,000 पद खाली पड़े हैं। वो 7,82,000 पद अगर तत्काल भर दिए जाएं तो हमारे बहुत से जवानों को, बहुत से सेवानिवृत्त जवानों को फायदा मिलेगा। ये हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड है। और इसके बाद हम ये भी कहना चाहते हैं कि एक कोवेनेंट एक्ट होना चाहिए जिसमें सरकार सेवानिवृत्त जवानों के बच्चों की, फैमिलीज़ की, जैसे कि यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोवेनेंट एक्ट है जिसके अंदर सरकार की जिम्मेदारी है कि जो अपने सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके बच्चों का, परिवारों का ख्याल रखें। तो ये एक नेशनल जिम्मेदारी होनी चाहिए, देश की एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनके परिवारों को इज्जत मिले और उनके लिए ठीक से आदर सम्मान हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे देश इस टाइम पे बड़ा यंग एवरेज एज है, हमारी 32 साल की उम्र है। इस 32 साल की उम्र के अंदर हर बच्चे को नौकरी चाहिए और हर ग्रामीण इलाकों के बच्चों की जो पहला चॉइस हुआ करता था कि मुझे फौज में भर्ती होना है। एक फौज की जो भर्ती होती थी उसके अंदर 100-200 वैकेंसीज के लिए 50-50, 60-60 हज़ार बच्चे जो है वो तैयारी करके उसके अंदर compete किया करते थे। तो हमारी सरकार ने देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है और अग्निपथ स्कीम लागू की है जिसके अंदर 4 साल के अंदर उसको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। अगर 18 साल का बच्चा फौज में भर्ती होगा तो 22 साल में वो रिटायर हो जाएगा। तो ये हम तो 1 रैंक 1 पेंशन मांग रहे हैं, हम ये मांग रहे हैं कि उसको 60 साल तक सेकंड करियर का ऑप्शन दिया जाए। और यहाँ पर देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि 4 साल उनको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी दी जाए, तो जिसमें से 4 साल में 1.5 साल वो ट्रेनिंग करेगा, 1.5 साल में वो यूनिट के अंदर जाके काम करेगा। तो उसको यूनिट के अंदर उसको 5-6 साल के जो सर्विस वाले जो जवान होते हैं उनको रंगरूट बोलते हैं कि ये तो रंगरूट है, अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। आज हमारा टेक्नोलॉजी वाली फौज है जहाँ पर हमें आर्टिलरी गन्स हैं, कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई बेस्ड इक्विपमेंट हैं, मिसाइल्स हैं, जैसे कि मैं खुद मिसाइल स्पेशलिस्ट हूँ। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगले 7-8 साल बाद अगर ये अग्निवीर रहे या अग्निपथ स्कीम चलती रही तो मुझे नहीं लगता कि देश में कोई मिसाइल का बटन दबाने वाला सुपर स्पेशलिस्ट या स्पेशलिस्ट पाया जाएगा। तो ये देश की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। इसके साथ एक और जुड़ी हुई चीज़ है कि 2020 से लेके 2022 तक 3 साल रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। देश में कोरोना काल की वजह से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। हमारे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में तकरीबन हर साल 75,000 जवान रिटायर होते हैं और उन 75,000 जवानों के अगेंस्ट हमारी भर्तियां होती हैं। लेकिन 3 साल में ये भर्तियां नहीं हुई तो हमारे जो 3 साल में हमारी
सेनाओं की जो कमी हो गई है, स्ट्रेंथ की जो कमी हो गई है, वो तकरीबन 2 से सवा 2 लाख की कमी हो गई है। और जो अग्निपथ स्कीम है उसके तहत जो भर्ती की जाएगी वो सिर्फ 45,000 की होगी। तो इसका मतलब हर साल 30,000 बच्चे कम लिए जाएंगे, 30,000 की फौज हर साल कम होती चली जाएगी। तो आप ये उम्मीद लगाइए कि 8-9 साल के बाद हमारी सेना का जो स्ट्रेंथ है वो कितनी कम हो जाएगी। मेरे हिसाब से जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से आज टोटल मिला के हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 15 लाख की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की, उसमें से तकरीबन 5 लाख हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी 8 साल के बाद। तो हम 10 लाख की फौज रह जाएंगे सिर्फ। तो जब हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान के साथ हॉस्टाइल है, हमारा ईस्टर्न बॉर्डर लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक का 2,500 किलोमीटर का बॉर्डर हॉस्टाइल है चाइना के साथ, तो हम इस घटी हुई फौज के साथ, कम हुई स्ट्रेंथ के साथ कैसे उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। तो ये एक हमारी देश की सेनाओं के साथ जो उसका फैब्रिक है, उसका सिस्टम है, जो उसके ईथोस हैं, उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि मोदी सरकार हमारे देश की डिफेंस फोर्सेस को कमजोर कर रही है, जैसे कि उन्होंने बाकी सभी इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने का काम किया है, तो डिफेंस फोर्सेस को भी कमजोर कर रही है। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। डिफेंस कम्युनिटी ने तकरीबन 182 हमारी एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब ने मिलकर एक फैसला किया है कि एक तो अग्निपथ स्कीम जो है उसको हम उसके खिलाफ पूरे देश भर में संघर्ष करेंगे और उस स्कीम को रोल बैक करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे। और मैं यही बात हमने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के सामने भी रखी थी। उन्होंने कहा कि ये स्कीम बहुत ही देश की एकता अखंडता के लिए खराब है, तो इसको हमें रोल बैक करना चाहिए। तो मैं और ज़्यादा बातें ना करके, हमारे पास बहुत समय मिलेगा, हर बात जो है, जो मैंने आज पॉइंट्स उठाए हैं, हर एक सब्जेक्ट है अपने आप में, तो हम एक सब्जेक्ट को अलग अलग डील करेंगे आने वाले समय के अंदर और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। हमारा विजन है कि पूरे देश भर के अंदर एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट, जो कि बहुत मजबूत डिपार्टमेंट बन सकता है, उसके लिए अगले हम 6-8 महीने में कोशिश करेंगे और 2024 के लिए हम अपनी कांग्रेस पार्टी को इतना तैयार कर देंगे कि 1 करोड़ जो डिफेंस कम्युनिटी के परिवार हैं उनको हम कांग्रेस की प्यार की, भाईचारे की, सहिष्णुता की, मोहब्बत की विचारधारा से और जो डेवलपमेंट की विचारधारा है उसके साथ जोड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को इसका बेनिफिट मिलेगा और कम से कम 7-8% वोट शेयर मैं गारंटी करता हूं कांग्रेस पार्टी को कि हम इस तरह से मस्टर कर सकते हैं और कांग्रेस पार्टी जो है आने वाले 2024 में सरकार बनाएगी और 100% बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो क्वेश्चंस हैं इस इशू पर, उनका स्वागत है और इसके अलावा अगर कोई इशूज रहेंगे तो उनके बारे में अलग से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ऐसा है जी, हम इस अग्निपथ योजना के पूरी तरह से खिलाफ हैं। हम पीएम मोदी साहब से गुजारिश करते हैं कि देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ खिलवाड़ ना करें और अग्निपथ योजना को आज ही इमीडिएटली इसको रोल बैक करें, वापस करें और अगर नहीं वापस करेंगे तो हम पूरे देश में इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन इसके लिए खड़े करेंगे।
मैं एक बात इसमें आपको थोड़ा और बताना चाहता हूँ। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर तकरीबन 7,80,000 जो हम पद बता रहे हैं, जो ये मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट का डॉक्यूमेंट है। ये बताता है कि देश में कितने सारे जो है पद वैकेंसीज जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट PSUs और सभी जगह पे दी गई हैं, तो उनको तुरंत प्रभाव से इसको भरा जाए। किसी को डॉक्यूमेंट चाहिए हो तो ज़रूर लें, ताकि हम जो बात करते हैं सही बात करते हैं और सही के लिए खड़े हैं और उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए खड़े हैं। धन्यवाद जी। कोई और किसी का सवाल नहीं है तो हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। हाँ जी, नहीं, ये देखो दो अलग चीज़ हैं। हमारे 15 लाख की फौज है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। उसमें हर साल 75,000 लोग रिटायर होते हैं, और रिटायरमेंट क्योंकि उनकी 35, 36, 37, 38, 40 साल तक हो जाती है, 42 साल तक हो जाती है। अलग अलग पद पे अलग अलग जो सर्विस की लिमिट्स हैं। तो ये उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, UPA सरकार के अंदर ये बात आई कि भाई इनको कोई सेकंड कैरियर ऑप्शन देना चाहिए। तो सरकार ने, UPA सरकार ने अपने कार्यकाल में हर डिपार्टमेंट के अंदर 10% रिजर्वेशन निर्धारित किया। ये रिटायरमेंट के बाद वो इन जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर अप्लाई करते हैं, लेकिन उनको लिया नहीं जाता। दूसरी चीज़, इन पदों को भरा ही नहीं जाता, क्योंकि सरकार जो है इनको भरना नहीं चाहती है। तो पिछले 10 साल के अंदर इन पदों को बिल्कुल भी नहीं भरा गया है। तो ये सब खाली पड़े हैं आज की डेट में।